So hello students, again I Anjum Nirban welcomes you to join the class of moral value. Okay, so today we are going to read chapter number 9, which name utilize and don't waste. यानी जो भी चीज है, जो भी things हमें मिली है, even it is either it is of by God or by people or by our parents. So we should utilize them. We should not waste them. Okay, so here let's start the chapter. Man is God's best creation. As we earlier read in our chapter that man is God's best creation. God का सबसे best creation कौन है? Man. Okay, human. He is the king of creation. Man is free to use everything according to his needs. God wants us to use whatever we need, but He does not want us to waste or misuse anything. God always tells us that please, you can do whatever you want, okay? But do not waste or misuse anything. Everyone has been provided with certain talent. Everyone having certain talents. Okay, these talents are not the same in everybody. Talents कभी same नहीं होते. Different kind of talents are there in different people. Okay, these are to be discovered. हमें इन्हें discovered करना होना होता है, developed and to be used fully for the benefit of mankind. So here people like Beethoven, Mozart, and Lata Mangeshkar may have musical talent. Okay, other like Einstein, Newton, and Edison may have scientific talent. There may be some with artistic talent and other with other type of talents. The fact is that every child is born with some type of टैलेंट यानी ये बताया है कि हर एक बच्चा किसी ना किसी टैलेंट से के साथ पैदा हुआ है बट वो हमें डेवलप करना है या फिर हमें डिस्कवर करना है दिस इज ऑन अस ओके दीज आर गिवन सो दैट दे मे बी डेवलप्ड एंड यूटिलाइज फॉर द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी इफ दीज आर नॉट डेवलप्ड एंड यूटिलाइज दीज आर वेस्टेड अगर हम उसे डेवलप नहीं करेंगे यूटिलाइज नहीं करेंगे हमारे टैलेंट का तो they are wasting. Okay, wasting these god given talent is a crime against society and against God. It is nothing but irresponsibility and indifference. यानी ये कुछ नहीं है, बस हम एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारी चीजों को लेकर. ओके, सो इसी वजह से हम हमारे टैलेंट को बाहर नहीं ला सकते. One will have to pay heavily for it. Okay, so now there is a short story. A parable is a kind of simple story in the Bible, makes it very clear. Now let us understand what the story tells us. A rich man called some of his people to him. Okay, he gave them 10 gold coins, each requesting them to trade with the coins until he returned from a trip abroad. Now what he did, he gave them 10 gold coins and asked them and requesting them to trade with that गोल्ड कॉइन्स कि आप इससे अपना कुछ भी ट्रेड करो, कुछ भी वर्क करो एंड जब तक कि वो अपने ट्रिप अब्रॉड के ट्रिप से वापस नहीं आ जाता है. दे वेंट अवे, तीनों के तीनों क्या चले गए एंड ईच वन डिड एज ही विश्ड और तीनों ने अपने अकॉर्डिंग वर्क किया. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द रिच मैन रिटर्न and waiting to find out what each of his people had done with the money he gave them. He called each one and asked for an account. उन्होंने तीनों को बुलाया आने के बाद और पूछा मनी के बारे में, what they did with that money. The first one said that he had traded and earned 10 more coins. उसने क्या बताया पहले वाले ने कि उसने मेहनत की एंड ट्रेड किया उन पैसों से और उसने कितना और कमाया 10 more coins. Then second man too said, second man ने भी कहा that he had traded and earned 5 more coins. Then in last the third man said that he had kept that coin safe. उन्होंने जो पैसा मिला था उसे सेफ रखा and produced them just as he had received. और वो जैसे ही उसे दूसरा मिलता तो उसे प्रोड्यूस कर देता. The rich man gave more money and more important position to the first two men and took away the money from the third one and sent him away. क्यों भेज दिया उसे? क्योंकि उसने इसका कोई ट्रेड किया ही नहीं, यूटिलाइज ही नहीं किया. He just waste his time. He just waste the opportunity what he gonna receive. Okay. सो उसने उस थर्ड पर्सन को बाहर निकाल दिया और दोनों को और भी इम्पोर्टेंट पोजीशन दी और उन्हें बहुत सारा पैसा और दिया. ओके, so what the story tells us that we should utilize our time, we should utilize our things. Okay, don't waste your thing whatever you are receiving. Okay, the same is the case with our talent और same हमारे talent के साथ होता है. We have to utilize them. They are not to be kept safe. Lighted
candle is to be kept on a table so that it gives light to the entire room. यहाँ पर एक कैंडल का एग्जांपल दिया है कि कैंडल जो है वो जब टेबल पर जली हुई रखी होती है तो ये पूरे एंटायर रूम को रोशनी देती है. दैट इज द पर्पज ऑफ अ कैंडल. और ये कैंडल का पर्पज है. ओके, इट इज नॉट टू बी केप्ट सेफ इनसाइड अ ड्रॉर. अगर हमने उसे ड्रॉर में रख दिया, लाइट गई हुई है, तो कोई रीजन नहीं निकलेगा कैंडल होने का. ओके, so we have received many other gifts or blessings from God. The same rule applies to them. Besides personal qualities or talents, we may have wealth inherited or acquired. यानी टैलेंट के अलावा भी हमारे पास कई बार इतना मनी होता है, वेल्थ होती है जो हमें इनहेरिटेड होती है, मीन्स विरासत से मिलती है. और समटाइम वी ऑब्टेन, कई बार हम मेहनत करके उसे ऑब्टेन करते हैं. इट इज नो यूज ऑफ अमेजिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ. इसका वो नहीं है कि हमें अमेज करना है, बहुत सरप्राइज है या हम बहुत खुश है कि हमारे पास बहुत सारा मनी है. इट इज गिवन टू अस सो दैट वी मे यूटिलाइज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी. हमें पैसा इसलिए दिया गया है गॉड के जरिए से कि हम उसको यूटिलाइज कर सके फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी. ऐसा नहीं हमने सिर्फ हमारे बारे में सोचा, हम सेल्फिश हो रहे हैं, हमने खुद का वर्क कर लिया, यूटिलाइज नहीं कर रहे, वेस्ट कर रहे हैं मनी का, ये ले लिया वो ले लिया. नो, दैट इज नॉट गुड थिंग. वी शुड utilize. Okay, after all we cannot carry any of it with us when we die. जैसा कि हम सबको पता है हम ये पैसा नहीं ले जाने वाले हमारे साथ when we are going to die. वेस्टिंग वंस वेल्थ इज अगेन अ क्राइम. और दूसरों का मनी भी वेस्ट करना भी एक तरीके से क्राइम है. इट इज अ गिफ्ट, वी हैव नो राइट टू वेस्ट. इट इज अ गिफ्ट, सो वी डोंट हैव एनी राइट टू वेस्ट इट. ओके, वी हैव टू अकाउंट फॉर इट वन डे. हमें इसको भी अकाउंट यानी इसका भी के बारे में भी बताना पड़ेगा गॉड को कि हमने कहाँ पैसा वेस्ट किया और कहाँ हमने इसका यूटिलाइज किया. ओके, सम पीपल ऑर्गेनाइज अननेसेसरीली सेलिब्रेशंस कॉजिंग ट्रेमेंडस एक्सपेंडिचर. यानी कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस कर देते हैं, कुछ ऐसा सेलिब्रेट करते हैं और उसमें क्या करते हैं, अ बिग वे ऑफ स्पेंडिंग मनी. उसमें इतना पैसा खर्च करते हैं कि उसका कोई सेंस नहीं निकलता. इट इज मिसयूज ऑफ वेल्थ. Instead of this, you can give some money to the beggars, you can give some you can help to poor persons. Okay, suppose आपकी बर्थडे पार्टी भी आती है और भी चीजें आती है, हम बहुत सारा मनी आई नो वेस्ट करते हैं, बट in spite of this thing we can do many utilize thing, like we can give money to poor, we can help the beggars. Okay, so do this thing. When thousands of people go hungry, a lot of food is wasted. Okay, God will never forgive such waste. यानी when thousands of people go hungry, a lot of food is wasted. यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो भूखे सो जाते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो कितना ही फूड वेस्ट करते हैं उसी डे पर. तो प्रॉपर मैनर ये होगा कि वही फूड उन हंग्री पीपल को दिया जाए. गॉड विल नेवर फॉरगिव सच वेस्ट. और गॉड बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाले ऐसा वेस्ट. Some businessmen stock a lot of food grains so as to create an artificial shortage to increase the price. This is a crime against society. Now कई बार businessmen ऐसे होते हैं जो बहुत सारे स्टॉक रख लेते हैं and कई बार कई artificial thing create करते हैं अपने प्राइस को increase करने के लिए. This is wrong because it is harmful. Okay, time is precious. Let's talk about time. Time is precious. लॉस्ट टाइम नेवर रिटर्न. ओके, जो टाइम चला जाता है वो वापस नहीं आता है. टाइम वेस्टेड इज टाइम लॉस. Yet many people don't bother about this precious wealth God has given them. This wealth is here talking about time. Okay, time is also precious wealth. They will have to regret it. जब टाइम चला जाता है उसके बाद रिग्रेट करते हैं, तब उसके बाद अफसोस होता है कि हमने काश कर लिया होता. ओके, electricity as well. Electricity is very useful and we all need it every day. Yet फिर भी how much of it is wasted because people don't bother about switching off fans, lights, TVs and pumps. पीपल और जो कुछ बच्चे कुछ बड़े या मुझे ही ले लो, सभी के बारे में बात है कि हम सभी को क्या करना चाहिए, बॉदर करना चाहिए अबाउट switching off fans, lights, TVs etc. Okay, whether we are talking about our schools or our home place. Okay, or even we are going somewhere else, हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर स्विच ऑन तो नहीं है, लाइट्स ऑन नहीं है, टीवीज वगैरह ऐसे ही नहीं चल रहे हो. ओके, नल वगैरह जो भी है पानी का है उसे बंद कर देना. ओके, तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए. लेट अस यूज व्हाट वी नीड बट लेट अस नॉट वेस्ट इट. हमें यूज करना चाहिए व्हाट वी नीड बट वी डू नॉट वेस्ट इट. Next is water. Water without which we cannot live is becoming scarce nowadays.
पानी एक ऐसी चीज है, बिना पानी के वी कैन नॉट लिव, बट इट इज बिकमिंग स्कार्स, मीन्स हार्ड टू रीच और लेस, और वी कैन से स्केंटी। पानी बहुत कम मिल रहा है आजकल, क्यों? इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, कि एक फ्री गिफ्ट है गॉड की तरफ से, इसलिए हम इसको वेस्ट कर देते हैं। हाउ वी वेस्ट इट विदाउट थिंकिंग ऑफ द डैमेज वी आर कॉजिंग, हम इसे वेस्ट कर देते हैं बिना सोचे बिना समझे। वी आर केयरलेस एंड थॉटलेस, हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं और हम बिल्कुल केयरलेस हो चुके हैं पानी को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, इवन हमारे टाइम को लेकर। वी आर डिगिंग आवर ओन ग्रेव्स। ओके, so I hope these things are clear to you all, that we should take care of our time, we should think about our electricity, water as well. Okay, God has given us many gifts and blessings. गॉड ने तो हमें बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन अब हमारे ऊपर है हम उसका यूटिलाइज करते हैं या मिस यूज करते हैं। दे आर ऑल ऑफ फॉर अस, वो सारी चीजें जो गॉड की तरफ से मिली है सब हमारे लिए ही है। वी मस्ट यूटिलाइज देम एंड डू नॉट वेस्ट देम, एज दे आर प्रीशियस। द थिंग्स आर प्रीशियस। ओके, whether it is by God or by our parents or by our friends, all things, all gifts, all blessings are precious, so we should utilize them and we do not waste them. Okay, so I hope you all enjoyed the chapter. It was really an interesting chapter, and in our next class we will be continuing our next chapter. Till then, bye bye, take care of yourself.